Hi, so let's do a quick analysis after the closing of 27th of July. So today there were very few good trades जिसको हमने पहले से ही आइडेंटिफाई किया था और वो डिस्कशन आप पहले हम मेरा मार्केट वॉच बोल के एक वीडियो आती है जो मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे और एक दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे ऐसे अपलोड किया था. नॉर्मली मैं एक BTST कॉल भी देता हूँ लेकिन आज मैं टुवर्ड्स द एंड आई वाज वेरी बिजी विथ ट्रेड्स एंड सो आई कुडंट. So these are the two market watch video. आप वो देखिए फिर then this would be addition on the top of it. So हमने सुबह से SBI लाइफ को हमने सिलेक्ट किया था, GODREJCP हमने कल से सिलेक्ट किया था. बोथ ऑफ देम क्लोज्ड एट 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई. और उसके साथ फाइजर भी हमने सुबह 10 बजे आइडेंटिफाई किया था एंड दिस ऑल्सो क्लोज्ड एट अबव 6000 लेवल्स. सो दीज फ्यू काउंटर्स आर looking really strong. You can see also HINDALCO हमने इस दिन से आइडेंटिफाई किया था बिकॉज दिस वाज अ वेरी बुलिश पैटर्न एंड वी वर एक्चुअली वेटिंग फॉर 394 395 लेवल्स जब ये ब्रेक की. सो इन द नेक्स्ट 2 डेज ये 395 से नियर अबाउट 420 चली गई है एंड आई थिंक 420 विल act like a very good resistance for this particular expiry. और दिस इज़ ऑल्सो बजाज फिनसर्व. ये तो बहुत सेशंस से ही चल रही है बट इन जनरल यू कैन सी दैट द ट्रेंड इज़ गेटिंग रियली वीकर इन नेशनल एलम एंड आई थिंक इज़ बिकॉज इट्स वेरी नियर 90 विच वॉज इट्स लॉन्ग टाइम. इसका एक रेजिस्टेंस है 90 से एटलीस्ट फॉर दिस एक्सपायरी रही है. और मन्नापुरम ऑल्सो मेड ऑल टाइम हाई है 52 वीक हाई जिसको भी हमने सुबह आइडेंटिफाई किया था एंड दैट आल्सो क्लोज नियर द डेज हाई. और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कैनरा बैंक हमने सुबह डिस्कस किया था 150 इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. और एक अच्छा ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था पेल पे मैंने बोला था 2400 इज अ गुड रेजिस्टेंस एंड दिस इज एग्जैक्टली वी शॉर्टेड एंड देन वी मेड अ गुड इंट्राडे मनी. सो आई एम नॉट कैरिंग द शॉट्स. यही जस्ट है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स को आपको देखना है. जस्ट लाइक हमने कल इसको शॉर्ट किया था PVR को 1400 पे बिकॉज दिस वॉज एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस फॉर दिस होल एक्सपायरी. सो ऑफ कोर्स यू नो दीज आर वेरी सिंपल ट्रेड्स. अगर आपको थोड़ी सी भी ट्रेडिंग आप करते हो तो बेसिकली दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स विच एनी चाइल्ड कैन डू. ICICI GI is actually one of the counters जो बहुत ही weak थी and this was the candle it formed before the result and then these two candles were formed after the result but right now it seems like this is trying to go towards 1500. सो हम देखेंगे ये 1500 को क्रॉस कर पाती है कि नहीं. दैट वुड बी अ रियली गुड थिंग. वन ऑफ द थिंग्स इज़ आज सुबह मैं दो SBI लाइफ HDFC लाइफ और ICICI GI बोला था कि ये तीनों ही भाग रही हैं एंड दिस इज़ यू कैन सी दैट बोथ SBI लाइफ एंड एज वेल एज ICICI GI क्लोज नियर डेज हाई. सो no matter where you bought and also HDFC Life had some profit booking but I think this is turning out to be a really good रिवर्सल कैंडिडेट. ये 700 से हमने ये शॉर्ट किया था और हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया था बट अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट एबल टू ट्रेड दिस वन. सो नो मैटर व्हाट अभी ये धीरे धीरे करके 700 की तरफ जाएगी. सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ गुड ट्रेड. नेस्ले इंडिया हमने 1750 में हमने रिवर्सल कैंडिडेट पे हमने डिस्कस किया था एंड फ्रॉम देयर इट वेंट टूवर्ड्स 18500 नियर अबाउट. और अभी दिख रहा है कि इसमें बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग हुई है. सो वी विल सी दिस माइट टर्न आउट टू बी अ गुड ट्रेड फॉर द नेक्स्ट सेशन. LT ने रिजल्ट दिया एंड समहाउ इट वाज एबल टू क्लोज अबव 1600. सो दिस इज़ इन फैक्ट अ गुड थिंग क्योंकि नॉर्मली जो कंपनीज रिजल्ट दे रही हैं उसके बाद दे आर हैविंग अ ह्यूज problem and in the sense that they are always facing some resistance in the higher levels. Ashok Leyland is a very good reversal candidate and this is also true for LIC Housing Finance. हमने इसको short किया था and right now we closed it earlier, maybe we closed it around about these days
और क्योंकि हमारा शॉर्ट हमने शायद इस दिन से स्टार्ट किया था, और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दिस माइट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड रिवर्सल कैंडिडेट. LT माइट टर्न आउट टू बी अ गुड ट्रेड. सो दीज आर द फ्यू काउंटर्स जो आपको अपने रेडार में डेफिनेटली मैं रखूँगा फॉर reversal trading and trying to see if some big positions they are actually getting created during market hours. So this video is more about finding the right charts at the end of the day, जहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में किसको हम ट्रैक करेंगे. आयशा मोटर का भी हमने ये किया था. हमने कल इसका रिवर्सल किया था, रिवर्सल ट्रैक करने के लिए बोला था, एंड दिस इज एग्जैक्टली इट वेंट टुवर्ड्स 2600. यस्टरडे इट वाज अराउंड अबाउट 2540 और 2550 लेवल्स. सो वहाँ से यहाँ पे 50 रुपये कम आ गया. एंड सो यू एक्चुअली हैव टू हैव दीज कंपनीज एम्फेसिस. इट सीम्स लाइक इट्स अ सॉर्ट ऑफ लूजिंग स्टीम, और ये अभी बहुत नैरो कैंडल्स बना रही हैं. until and unless the all time high is again taken off, this would again be a company जिसको हम लोग डिप पे बाय करेंगे. And theoretically speaking, I think the chances of it making all time high after this is more, क्योंकि यहाँ पे high low formation हो रही है, and this actually signifies that it's able to withstand the selling pressure, the profit booking जो भी हो रही है. मुथूट फाइनेंस was one of the companies जिसको हमने अभी ट्रैक करना शुरू किया है, एंड आई थिंक मुथूट कैन रियली गो टूवर्ड्स 1600. और इसी रीजन से कि हम 2 दिन पहले से बोल रहे हैं कि जितने भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं दे आर रियली डूइंग गुड. बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इसके साथ हमने श्रीराम ट्रांसपोर्ट का भी एक ट्रेड लिया था जिसको आज मैंने 1409 में क्लोज किया. सो दीज आर सम ऑफ द काउंटर्स विच आई जस्ट लाइक मन्नापुरम भी हमारे ट्रैकर में था for the same reason that these companies are able to withstand the selling pressure, and it seems like the FIIs are only selling not that much of the financials, but they are more selling in other sectors, as a result of which आप देखते हो कि by logic you can see from Bajaj Finance, Bajaj Finserv, ये लोग all time high बना रहे हैं every day. So this actually showcases that the FIIs are not relentlessly selling on these counters, as a result of which अगर ये counters में FII selling नहीं हो रही है, so this itself gives us advantage in the sense that you are not fighting against the trend. So this is a very simple logic, and hope you guys will also understand and follow this in the future. आती इंडस्ट्री हम लोग 900 का देख रहे थे, and now you can see that we were able to we missed out this particular day. But we were able to take the breakout which happened over 880, and from there we went towards 900, or now it's very near to its all-time high, and we will see how it goes from here. At the end of the day, it seems like the trend is actually getting weaker. Maruti is again trying to hold this 7200 levels, and we will see if it is able to move forward. So Maruti is also looking really good from here. MINDTREE is also one of the counters which can in the very short term give us a very good breakout. This was on the day after the result, and after that it has been able to go towards 2800. So I would suggest to keep a track of 2800 levels, and then maybe we can see some more all-time highs in MINDTREE. Coforge is also forming a pattern which is very similar to Emphasis, and we have to track Coforge too. So you can see that even though this big IT names are they are having profit bookings, but still ये जो mid cap में है section में they are still able to maintain. Even ICC is also ACC is also getting weaker. Motherson Sumi 230 में reversal कैंडिडेट हो सकती है, लेकिन फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट इट सीम्स लाइक it has more weakness going forward, and we have to see if it is able to maintain the levels of 230. LTI भी मेरी एक फेवरेट कंपनी है जो एक बहुत ही अच्छी पैटर्न फॉर्म कर रही है, एंड आई थिंक वेरी सून इट विल ब्लास्ट 4500. सेल भी हमने ट्रेड लिया था इस दिन फ्रॉम 128 to 131, and today it went towards 132, and also so basically you can see that a lot of these positions in the trend is getting weaker is because people are shifting
फ्रॉम वन एक्सपायरी टू अनदर. अभी जितनी एक्सपायरी नज़दीक आएगी उतना पैसा ये लोग यहाँ से निकाल के नेक्स्ट एक्सपायरी में लगाने की तैयारी में है. एंड हेंस यू कैन सी देयर आर सो मेनी काउंटर्स विच आर लूजिंग द trend, but eventually the trend has to follow. Just like Godrej Properties is also a very good reversal candidate. It is forming a very good pattern going forward. It can also be one of the counters जो यहाँ से 1600 जा सकती है. कोलपैल की रिजल्ट आने वाली है और उसके पहले ये भी थोड़ी सी पोजीशंस इसमें डाइल्यूट हो रही है. And so in general this from the some market sentiment you can see that Bandhan Bank में just like दिख रहा है कि और भी weakness आ सकती है. ACL Tech is having a resistance at 1000 levels, and ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब तक 1000 के अबव क्लोजिंग ना आए डोंट इवन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग इन ACL Tech, क्योंकि ये सब काउंटर्स में FIIs सेल कर रहे हैं. So basically you have to take care of that. Bell is also has been in a box between 180 and 185. इसका एक बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट आया था, but in the very next session there was no particular follow-up, and now you can see it is forming a very good contraction, and going forward it will also give us a very good trading. From the looks of it, it looks like Bell should be moving more up rather than down, but it will be something which we have to see in the near future. Tata Motors भी result के बाद it was able to hold the levels of 285, and you can see that the shorts are getting it seems like the downtrend is getting weaker, or maybe we have to track this for any immediate reversal that happens. आज हमने नवीन फ्लोरिन को भी mention किया था. नवीन फ्लोरिन was a very good short candidate, and you can see that after a result it was unable to hold these levels. और अभी अगर हम लोग एकदम नीचे में जाते हैं, so the companies which are really looking good for as a short candidate is obviously Dr. Reddy. Stay away from Dr. Reddy, and even if some bounce comes, I would suggest stay away from Dr. Reddy, as this would be gambling and not trading. Similarly GLENMARK हमने short discuss किया था कि this is looking weak. Then it was at 650 levels, and today it closed below 600 levels, so this was also a good trade. APL Limited भी हम लोग discuss किया था. This is weak, and this is also what you can see is we discussed it when it was around about at 960 950 levels, and from here it's down to 800 levels. So the results were bad in APL Limited, and hence this downfall. RAMCOCEM also had a great fall after the results, and so this is also looking a really good candidate for shorts with any weakness in Nifty. In general, companies like RDC Limited, ये हम लोग का बहुत एक अच्छा ट्रेड था जो हमने लिया था, and we were able to create shorts above 152, और मैंने बोला था 155 में stop loss लगाने, and you can see that the stop loss was never hit, and from there it's down to 145 levels. This is also true for Lupin. AUROPHARMA आज actually Cipla over here. So in the morning I actually granules over here, so in the morning I explicitly told to stay away from pharma, and pharma was the only sector जिसमें आज maximum intraday downfall आई है. But there's nothing to worry. I'm pretty sure that very soon new positions will come in, and theoretically it will try to move higher. So in general the market is a sort of a mixed bag. Indigo is going to post its results, and before that you can see there's it's trying to come in trend. So from the looks of it, it looks really weak, as long as it's below 1800, but again as long as 1700 levels breach नहीं होती है इसमें अभी भी ये actually एक 1700 to 1800 is a no trade zone. Also SUNTV is weak. SUNTV 520 में आके हमेशा एक सपोर्ट लेती है, and then it goes towards 560 to 580, and then again it faces resistance. Tata Consumer आज all time high बनाई थी, and after that you can see the drastic fall it has had, क्योंकि आज today was not the day for FMCG or IT or
और दिस फार्मा सेक्टर्स, इसलिए आप ब्रिटानिया भी देखते हो। हमने यहाँ पे ब्रिटानिया डिस्कस किया था जब मैंने बोला था कि 3500 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम लोग देखेंगे, एंड यू कैन सी दैट इट वेंट टुवर्ड्स 3500, सो दिस वाज अ गुड लॉन्ग ट्रेड एंड देन इवेंचुअली इट immediately corrected. So every thing in the market is, it seems like there are heavy selling pressures at the top level. So this market is more about trying to find the particular sectors or the stocks which are running, उस पर आप अपना पोजीशन बनाओ, या आप ऐसे कंपनीज में पोजीशन बनाओ जिसमें यू कैन सी अ वेरी गुड रिवर्सल कमिंग सून. सो वन ऑफ द कंपनीज जिसमें मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये वेरी गुड कैंडिडेट फॉर रिवर्सल है, और वो है बजाज ऑटो. So Bajaj Auto, after results, it had a great fall, and especially the fall started after this dividend. But going forward, I think Bajaj Auto will be a very good counter, जिसमें आपको रिवर्सल बहुत जल्द देखनी चाहिए. Even Exide Industry also is something which we discussed in the morning. Because right now it might be also a very good candidate for reversal. This is also true. MGL is also looking weak below 1150. Indus Tower is also looking weak. Sale में भी आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन यू कैन सी इज मेकिंग हाई लोज. सो इन जनरल दिस इज हाउ द मार्केट इज पोइज्ड. सो आई थिंक एवरी काउंटर जो भी ऊपर जा रही है, they are facing some profit booking, and then eventually they are all falling. From a result perspective, all the results are looking really bad, except some very few companies. But in general, जो भी results market में आ रही हैं, after that the companies are having some really good sell off. So एक company जो मैं tweet किया था आफ्टर रिजल्ट, वॉज दिस वन JSW स्टील, और ये 700 लेवल पे आई है. थियोरेटिकली आई थिंक even though the data has not formed, but definitely you should stay away from JSW steel, as very soon there can be more weakness in JSW steel. This is just what I am seeing. So this is one of the companies, and the only company which I am really proud of is ICICI Bank. Even though it posted its result which was bad for me, still it was able to hold the levels of 660 जो हमने पहले डिस्कस किया था. रिजल्ट के बाद मैंने एक पोस्ट एनालिसिस वीडियो किया था जहाँ पे मैं बोला था 660 जब तक वायलेट नहीं होती है तब तक इसमें वीकनेस नहीं है, एंड इट रिवर्स्ड फ्रॉम 666, एंड नाउ यू कैन इवेंचुअली सी दैट every day it's trying to make smaller candles, and now let's see which direction the market is going to burst. From the looks of it, I really don't think that there is much weakness in the market, nor can I say that there is strength in the market. The market is looking the same, as if it is going to consolidate, and no matter how bullish you are or how bearish you are, the market is always going to make its own move. और अभी try to stay away from all the media, and try to stay away from these experts. Try to use your own logic and try to understand, because the concept is very simple. The concept is, if you had 100,000 crores which you wanted to invest, so आप उसको कहाँ पे लगाओगे और आप उसको कब लगाओगे, आप उस लिहाज से सोचो. Don't think about the small capital which you want to deploy, but think of a huge capital. क्योंकि अगर मार्केट में सचमुच बहुत करेक्शन आने वाली है, so why would people go and have Bajaj Finserv and Bajaj Finance, such big companies, इसको क्यों इतने हाई रेट्स में अभी भी ये ट्रेंड कर रही है, एंड वाई इज देयर नो प्रॉफिट बुकिंग कमिंग, राइट? यू कैन सी बजाज फिनसर्व इज लाइक moving like hell. अब तेरा it was below 13,000, and in 4 sessions is near 14,000. So if someone is telling you to be bearish in the market, he is wrong. And if someone is telling you to be bullish in the market, he is also wrong.
theoretically try to use your own logic and try to see which counters are moving and which are coming in trend. जो भी ट्रेंड में आ रहा है आप उस पर ट्रेड करो. Just like say for example Nestle India, you can see over here is a strong trend. Godrej consumer products is in strong trend. SBI Life is in a strong trend. Pfizer is in a strong trend, and so is Hindalco on the long side. और short side में जो trend में है वो APL Limited, DRREDDY, RAMCOCEM, GLENMARK, AXISBANK आप देख सकते हो. It broke 740. अगर immediate reversal नहीं आया, just go ahead and sell the 780 call. You can see the 780 was always a resistance. Even 760 was a resistance, right? So you can even sell 760 and then hedge yourself with 780. So these are so simple trading concepts which if you deploy in the right scripts at the right time, then theoretically you are going to be sitting in profit. क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट आने वाला था, वो आ गई है. उसके बाद मार्केट हैड इनफ टाइम टू रिएक्ट, and then eventually the bulls and the bears, they fought amongst each other, and then they decided that okay, closing 740 ke below hogi. So these are very good trades which you should take, which has more higher chances of profit, and hopefully this knowledge will help you in deciding your next trade. As always, please consult your financial advisor for any trades or investment related queries, as there's a lot of risks involved, and my video is just for educational purpose. Thanks a lot. Bye bye. Have a nice evening. See you tomorrow. Bye bye.